Assalamu alaikum everyone and welcome back to Future Serve Overseas Education Services. My name is Varda Mazhar. And my name is Arbab. Sir is currently serving as an ESL and IELTS instructor. So guys, before getting started, let me give you a little bit about Future Serve. So Future Serve is basically an educational advisory, and we are offering you three different types of services. That is the career counseling, that is the international exposure, and the skills development. Under the umbrella of career counseling, what we do is we help you find your path, your way. We keep your academic record in consideration, and our career counselors help you find the best suitable disciplines in which you'd like to pursue your higher education from abroad. And when it comes to abroad, we are dealing into different countries. That could be United Kingdom, United States of America, Germany, and much more. Plus, we are also going to teach you, guide you through the universities into which you would like to pursue your higher education. We also give you the fee structures, the eligibility criteria, and the English language proficiency test information, that which test you should go through. Also, we guide you through your application processes, your documentation, and your visa procedures. And there is much more for you people. All what you have to do is to step in to Future Serve Overseas Education Services. Okay guys, so next one is the international exposure, the most important of all, because when you're traveling abroad, that is obvious that you don't know nothing about the new place you're going to live a little longer. So Future Serves is basically sharing with you the lifestyle and the living standard of those people. Plus, we also guide you through the pre and the post departure. We give you the traditional and the cultural tips and much more again. In the skills development, one thing is definite, that when you are traveling abroad, you definitely would love to experience the job market of that place. So Future Serve is sharing different types, different kinds of professions with you people. We'll give you some tips through which you can easily mingle with the job market of such places. So this is it, a little bit about Future Serves. So guys, the topic that we are going to discuss today is all about the future tenses. Yes, we have covered the present tenses for you people. We've covered the past tenses for you people in brief detail. And today we are going to request our instructor, Mr. Amar Awais, to throw light on the future tenses in extreme detail. We are going to learn the importance. We are going to learn the rules and regulations, the conditions, the sentence structures, the auxiliary verbs, and much more. So sir. Alright, in the name of Almighty Allah, who is the most merciful and compassionate, who is the King of the Kings and the King of the Day of Resurrection. The first Ashra of Ramadan is finished. Now we have hopped into the second Ashra. Looks like Ramadan is passing very well, but I'm a bit sad that it is going to finish. It's going to be like the first one, the first day of the second Ashra, right? So I request all of my viewers to pray for me, because this is the Ramadan and this is the blissful month, right? So we're going to discuss about the past. We're going to discuss about the future, because we have already completed our past tenses, we have already completed our present tenses, and the last but not least, we're going to speak about the future tense. So future tenses are basically the tenses which talk about the actions which may happen in the future. Basically, being as Muslims, we cannot predict the future, or being as humans, we cannot predict the future. But there are some sentences which you speak that you may do in the future, right? So being as Muslims, I give the authority, I give the permission to my students that they have to use inshallah at the end of sentence, because it relates to Islamic point of views, right? But the point is, you have to understand about the rules, about the auxiliaries, about the tenses, about the ways, about the segments, about the criteria, about the situations, so that you can easily make the future tenses. Now in future tenses, majority of the people use simple future tense as their basic tense, right? Now, as I said, we have four part of tenses, right? We have a simple tense, we got four classification, as I said back, when I was teaching the rules of the tenses. So it is simple future, future continuous, future perfect continuous tense. So you're actually going to talk about the four tenses which are commonly used in English communication, all the way trying to speak about the future, ongoing, and upcoming actions. So in upcoming actions, you literally talk about the unpredictable actions, because future is unpredictable, you cannot predict the future, but somehow, so far so good, you make a sentence, just try to convey your message that on what particular time, on which particular case you would do that action. So you talk about the future. So for futures, we have specific auxiliary verbs, will, would, shall, right? And will have been, right? And will be, right? These are the auxiliaries which are used in future tenses. So I will talk about the simple future tense. As I said before, that simple future tense is the most commonly used
tense in English communication Okay. when it talks about the future actions. Yeah. So when you talk about the future action, it means that the actions which may happen in the future. I'm talking about Exactly. simple future tense. The actions which may happen in the future. Which may happen. Yeah. ठीक है. You cannot predict it, no? Yeah, So you would call it you may happen in the mustaqbil. Yep. So you convert the sentences, you make the sentences in such peculiar way so that you know the essence of the sentence is made. So you can call it actions which will happen in the future. Yeah. So you talk about the verb's first form of action, you talk about the subject, you talk about the auxiliary in which you use shall and will, right? So shall is used with I and we. I and we, right? You use shall with I and we only, and you use will with the other pronouns. You, we, they, he, she, it, right? So you use the sentences for it. So you talk about the actions, you use verbs first form in simple future tense. Later on, you again come back, you talk about the positive sentences, the negative sentences, the interrogative sentences, the negative interrogative sentences. You try to make the sentences, you try to pursue the listener with the sentences you're speaking in front of him. So like if you talk about the simple future action, you would say, okay, I would do the action today. I will do the thing tomorrow. I will do it tomorrow. I will take the class tomorrow. I will eat in the restaurant tomorrow. I will take my family to outing tomorrow. Like such of the actions which are used in the future actions, but you cannot predict it. So that is the case that simple future tense is commonly used because it is not that much prioritized. It is like not given with that much preference and privilege like the way simple present is doing, like the way simple past is done, like the way simple present is done, like the way present perfect is done. So it is not the case with the simple future tense. In short, we can plan our future, but we cannot give the guarantee whether we are going to do it or You not. can say it. Yeah. You can say it. Exactly. You cannot give the guarantee Yeah. that I will do it. But in simple future tense, when you use will, it means that you are giving a guarantee that you will definitely do at any cost. So I think the such definition will not be correct that you cannot give the guarantee. You can give the guarantee if you use will in your English communication, that I will. एंड उस गारंटी के ऊपर आप एक ठप्पा भी लगा देते हो जब आप उसको डेफिनेटली लगा देते हो, आई विल डेफिनेटली डू इट. फिर उसको थोड़ा और इनहेंस करते हो, आई विल डेफिनेटली डू इट एट एनी कॉस्ट. ठीक है, तो वो आप उसको फिर दे देते हो, गारंटी दे देते हो, लेकिन देना नहीं चाहिए. लेकिन you cannot, प्रेडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही थी ना कि हम उसकी गारंटी एटलीस्ट नहीं जी, दे सकते ना. yes, you cannot take the guarantee. You can never take the guarantee. आप जब उसकी गारंटी देते हो ना तो फ्यूचर में तो आपको खुद पता नहीं कि क्या होगा मेरे साथ, तो आप कैसे गारंटी ले सकते हो. दिस इज माय पॉइंट कि वी कैन प्लान बट वी कैन नॉट गिव द गारंटी. जी जी जी, ऐसे इसी तरह. तो सिंपल फ्यूचर टेंस, positive, negative interrogative, like these are the fundamental rules, and like these are the tenses, like you use in the communication. There is no rocket science in it. Exactly. And I think that we are much clear with this concept because we have talked much about it. Yes. I have been speaking about the tenses for past many years. Yeah. And for our students now, like हम in live sessions में भी हम present और past tense में इन सारे fundamentals को discuss कर काफ़ी चुके हैं. काफ़ी चीज़ें मैं बयान कर चुका हूँ. मुझे नहीं लगता शायद कि इसमें और कुछ इस तरह का कुछ होगा कि मैं स्टूडेंट्स को बताऊँ, उनको पता ना हो. आई थिंक अगर उन्होंने मेरे प्रीवियस सेशंस अगर सुने होंगे तो बस ठीक है, उनको पता होगा. कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँ स्टूडेंट्स के लिए. बहरहाल फिर भी स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं. अच्छा, आई टॉक्ड अबाउट द सिंपल फ्यूचर टेंस. नाउ लेट अस कम टुवर्ड्स द फ्यूचर कंटीन्यूअस. मतलब demonstrate it, like give some examples. I will take the test tomorrow. In the negative. I will not take the test tomorrow. Will I take the test tomorrow? Will I not take the test tomorrow? And what is the difference between, like you have told us the difference between shall and will, but how to like use it in the sentences? shall को जो है ना आप सिर्फ I और we के साथ यूज करें हमेशा. अच्छा. फ्यूचर टेंसेस में I और we के साथ, जैसे shall we be leaving now? Shall we be leaving now? Shall we be leaving now? I shall perform the prayer. अच्छा, यानी कि shall और will both we can use them with I. हाँ दोनों को यूज करो. will आप तब यूज करते हो जब कंफर्मेशन देते हो किसी चीज. लेकिन shall के लिए ये रूल है कि हम लोग I और we के अलावा से यूज नहीं है, उसको आपको यूज नहीं करना. ठीक है, आई शल को आप सिर्फ उसमें, ये किंग जेम्स का एक रूल है. किंग जेम्स वाज द किंग, बादशाह था एंग्लो सैक्सन के ज़माने में. रिस्पेक्टेड अदर्स. ठीक है, तो वो जो अपने साथ जो है अपनी रियाया को भी रिस्पेक्ट देता था, तो वो रिस्पेक्ट के लिए जो है शल का वर्ड इस्तेमाल करता था. सेम इज़ द केस, वो सदियों से चलता हुआ आ रहा है एंग्लो सैक्सन के ज़माने से. तो इसीलिए जो है आई और वी के साथ शल को लगाया जाता है, और विल को जो है कॉमनली
लगा। अब दूसरी बात आप देखेंगे जो अमेरिकन हैं, अमेरिकन अपने कॉन्वर्सेशन में शल का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ब्रिटन्स जो हैं वो अपने कॉन्वर्सेशन में शल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो फॉर्मल है। आप जब एप्लीकेशन लिखते हो आप क्यों कहते हो कि आई शल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस? क्यों? क्योंकि शल जो है मेरे पास क्या है जनाब, फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मेट है। बट व्हेन इट कम्स टू अमेरिकन इंग्लिश तो वहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। अमेरिकन बिल्कुल भी यूज नहीं करते। अमेरिकन बिल्कुल भी यूज नहीं करते शल को। ऑब्वियसली इसकी उनके पास अलग से रीजनिंग होगी कि हाँ, बस वो यूज नहीं करते थे, वो डायलेक्ट में चेंजेस है ना, आपको पता है। अच्छा, सही सही। तो डायलेक्ट की वजह से हाँ। ओके, नेक्स्ट वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक सेमी ऑक्सिलरी वर्ब का इजाफा हो जाता है बी का। आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग इन अ कॉन्सर्ट टुमारो। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब तो आ गया, लेकिन उसके साथ विल शैल के साथ क्या लग गया? बी, जिसको सेमी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। सेमी ऑक्सिलरी, ठीक है। मतलब जो 23 ऑक्सिलरी वर्ब्स है ना, उसके अंदर 20 जो हैं वो फंक्शनल ऑक्सिलरीज हैं, 3 जो हैं वो सेमी ऑक्सिलरीज हैं, बी, बीन और बीइंग। बी, बीन और बीइंग, ये हमारे पास क्या है? सेमी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो ये सेमी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। उस हिसाब से जो है एक सेंटेंस को सही तरह से यूज़ किया जा सकता है कम्युनिकेशन में। अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल दैट सर अवैस will be teaching grammar in the class today. Yeah. Sir Amar Awais will not be teaching English grammar in the class today. Will Sir Awais be teaching English grammar in the class today? Will Sir Awais not be teaching English grammar in the class today? So it is all about the words जो आप उनको एक अमली शक्ल देते हैं सिंपली, तब जाकर आप उसको फ्यूचर टेंसेस में यूज़ करते हैं। अब जो फ्यूचर टेंसेस के ऑक्सिलरीज है मैंने ऑलरेडी बता दिया, विल, शल, हैव और बीन। विल, शल, हैव और बीन। अब परफेक्ट टेंस में कॉन्टिन्यूस की तो मैंने ऑलरेडी बात कर ली ना कि कॉन्टिन्यूस में क्या है और क्या नहीं है। अब मैं बात करता हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहा जाता है जो आप अपने फ्यूचर में ख़त्म कर चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कल इस टाइम तक तो मैं पेपर दे चुका हूँगा, दे चुका हूँगा। आई विल हैव फिनिश्ड द पेपर बाय दिस टाइम टुमारो। ये मुझे बड़ी खत्म कर चुका हूँगा। यस, खत्म कर चुका हूँगा। एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब वो काम जो मैं खत्म कर चुका हूँगा। द एक्शंस व्हिच विल हैव फिनिश्ड इन द फ्यूचर, या तब जाकर जो है आपका कम्युनिकेशन जो है वो उसको परफेक्ट टेंस के साथ उसको सॉर्ट आउट उसको आप कर सकते हैं। तो ये केस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को मैं बताऊँ। I want to teach it to the students. I want to tell the students that yes, these are the parts which you have to use in your communication, as well as in academic writing, as well as in the speaking, or as well as in the reading sectors। वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा मिलेगा। यानी आप ज़ाया तो नहीं कर सकते ना टाइम। And when you start listening to some things, तो आप इस चीज़ पे फोकस करें कि कहाँ पर कौन सा टेंस यूज हो रहा है। So it will definitely improve your listening, your communication, your writing, your reading, everything. Yes, yes, exactly, exactly, 100%. So this is about the future perfect tense. ठीक हो गया। उसमें आप क्या यूज़ करते हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में? विल, शल, हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ठीक है। आई विल हैव ईटन द लंच बाय टुमारो, आई विल हैव टेकन द क्लास बाय टुमारो। तो आप विल, शल के साथ क्या लगाते हो? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा के आप उस सेंटेंस को मुकम्मलते हो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस सेक्शन को कहा जाता है जो कि आप फ्यूचर में एक बहुत ही लॉन्ग टाइम की ड्यूरेशन में आप कर रहे होगे। लाइक ये वो टेंस है जो कि आटे में नमक के बराबर इस्तेमाल होता है। आई मस्ट से बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कल इस टाइम पर मैं 3 घंटे से ड्राइविंग कर रहा हूँगा। तो ये एक्शन में समझ नहीं आती ना, मतलब इतना सेंटेंस को यूज़ नहीं करता, ना ही किसी के पास इतना टाइम है कि इतना लंबा सेंटेंस बोले। तो आप क्या बोलोगे कि आई विल हैव बिन ड्राइविंग द कार फॉर 2 आवर्स टुमारो। तो वो है ना, विल हैव बिन, शल हैव बिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रिमेनिंग सेंटेंस, वो एक बड़ा लंबा से खाता बन जाता है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस है जो कि आपको वो एक्शंस बताए जो कि आप फ्यूचर में एक लॉन्ग टर्म की बुनियाद पर कर रहे होगे। लॉन्ग टर्म की बुनियाद पर कर रहे होगे। ठीक है। अच्छा, सिंस और फॉर वाली चीज़ यहाँ आ जाती है। बिल्कुल, ये सिंस और फॉर, सिंस आप देखें, सिंस जो है ना
और फॉर मैं जरा इसको समझा दूं, स्टूडेंट्स को बड़ा बिल्कुल मसला हो समझा जाता दें, या है। बिल्कुल देखिए, बताएं। सिंस और फॉर ये दोनों prepositions हैं, ठीक ठीक है। है। सिंस आप उस जगह पर यूज करते हैं जहां पर आपके किसी एक्शन का एंडिंग टाइम मालूम ना हो, या एंडिंग टाइम मालूम ना हो। मालूम ना स्टार्टिंग हो। टाइम तो मालूम हो लेकिन एंडिंग टाइम मालूम ना हो। फॉर एग्जांपल, आई हैड बिन सिंगिंग, क्या सिंगिंग, आई हैड बिन स्टडीइंग बुक्स सिंस 2015, यानी मैं 2015 से किताबें पढ़ रहा था। 15 से कब तक पढ़ रहे थे, वो एंडिंग टाइम नहीं मालूम। सही है। तब आप क्या करोगे, उसको सिंस में सेंस इस्तेमाल में करोगे। एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, एंडिंग पॉइंट मालूम मालूम नहीं है। ठीक सेम है। इज द केस विद फॉर। व्हेन यू यूज फॉर, इट मींस दैट you have both the starting and the ending time. You ठीक have है। cleared the starting and ending time. For example, I will have been singing for 3 hours. तो 3 आवर्स मेरे पास क्या हो गए, कंफर्म हो गए कि 3 घंटे ही पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना नहीं, सिंगिंग। सिंगिंग करनी है। यस, 3 घंटे। तो अब 3 घंटे जो है आप क्या करेंगे, सिंगिंग करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए जो है सिंस एंड फॉर को क्या किया जाता है, एक सेंटेंस में, एक कम्युनिकेशन में इसको इस अंदाज से बनाया जाता है ताकि एक सही एक मैसेज मिल सके लोगों को। So guys, this is it for today. Thank you so much for your patience, for your time, for being here with us. We are very glad कि आप लोग अपने comments हमें दे रहे हो. It means a lot to us. Do comment and do share our videos because आप इस तालीम को फैलाएंगे तो वो आपको उतना ही सवाब होगा। Because रमज़ान भी है, नेकी कमाने का मौका भी अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, तो जितना भी इल्म फैलाएंगे उतना ज़्यादा आपके अमाल जो हैं उनमें अच्छाई में इजाफा होता जाएगा। So guys, this is it for today. I would recommend you to visit FutureServe Overseas Education Services. We are available for you people from Monday to Saturday from 10 o'clock a.m. to 7 o'clock p.m. And our address is really very simple. It is reachable. That is Sheikh Yaseen Trade Center, third floor, main Arbab Road stop. I would recommend you to visit our Facebook page so that you'll never miss the chance to attend our live sessions. So guys, be yourself, be safe, remember us in your prayers, and always remember FutureServe Overseas Education Services is always here to serve you. Thank you very much.